जैसे अर्बन एरियाज में हम लोग ट्रैफिक जैम में पहुंच जाते हैं, लगता है मिर्च अर्बन मिशन भी जो है ये कहीं अटका हुआ है, अभी तक इसका कोई भी कॉन्क्रीट जो है हमको परिणाम नहीं दिखाई पड़ रहा है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा, विलेज चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स पूरे राज्य भर में, और मैं अगले स्लाइड में आपको बताता हूँ उसकी स्थिति, पूरे राज्य भर में कुपोषित बच्चों को उनको यदि वो कुपोषित होते हैं तो उनको गांव में ही या अपने घर के पास में ही उनका इलाज भी हो, उनको कुछ खाना भी मिले, उनका कुपोषण कम करने के लिए कुछ उपाय किए जाए। इसलिए BCDC पूरे राज्य भर में चल रहे थे। इसका पूरा बजट ये नेशनल हेल्थ मिशन के बजट के तहत था 2012-13 में। तो ये इस ग्राफ को देख कर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में कुपोषण खत्म हो गया। यदि इस ग्राफ को हम देखें तो इससे ऐसा लगता है कि 2012-13 में बहुत कुपोषण था, तो 1600 हमने करोड़ लाख रुपए खर्च किए, फिर जो है थोड़ा कुपोषण कम हुआ तो लगभग 1000 लाख तक पहुंचा, और फिर 2015-16 में आना है, यानी कि पिछली बार तो पूरे राज्य भर के सारे BCDC बंद कर दिए, दे हैव बीन क्लोज्ड डाउन। इसके बाद जब बहुत मुद्दा उठाया गया तो फिर मेलघाट में, वहाँ हाईकोर्ट में मुद्दा उठाया तो मेलघाट में वो फिर से रिस्टार्ट किए गए। मेरे ख्याल से रिसेंटली पालघर के कुछ एरियाज में रिस्टार्ट किया गया और शायद चंद्रपुर के कुछ एरियाज में, लेकिन इसके अलावा आमतौर पर पूरे राज्य भर में BCDC जो कुपोषित बच्चों का इलाज और उनको पोषण देने के लिए बनाए गए थे, इतना महत्वपूर्ण वो प्रोग्राम है, पूरे राज्य में बना है। और वैसे चाइल्ड ट्रीटमेंट सेंटर्स जो PHCs में चलाए जा रहे थे, जहाँ छोटी मोटी बीमारियां कुपोषित बच्चों की, उनका इलाज करना, उनको रखना, वो पूरा बंद है। ये पूरा बजट से लिंक्ड है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बजट कट यानी कि कुपोषित बच्चों का कार्यक्रम बंद। अब इसके बाद जो बात डॉक्टर कर्णिक ने भी रखी कि सारा पैसा जो एलोकेट होता है वो खर्च भी नहीं होता है, और ये भी अपने आप में एक मुझे लगता है हम सबको अब इसके ऊपर भी काफी ध्यान देना चाहिए। और ये थोड़े से आंकड़े हैं 2015-16 के, जो कि 17 मार्च को, जब साल लगभग खत्म हो चुका था, शायद मुश्किल से 2 हफ्ते बचे थे, तब रवि ने ये पूरे आंकड़े निकाले कि एक्चुअली जितना खर्च होना चाहिए था उसका कितना % खर्चा हुआ, वो पूरा खर्च हुआ ही नहीं। और आप देखेंगे कि मेजर अंडरस्टैंडिंग है, रूरल डेवलपमेंट में 38% है, पब्लिक हेल्थ में 27% है, हाउसिंग में तो 83% है। और फिर हमने हेल्थ के मामले में थोड़ा और डिटेल में देखा कि मेडिसिन के ऊपर जो खर्च होना चाहिए वो एक्चुअली जितना एलोकेटेड है वो खर्च हो रहा है या नहीं। तो 24 मार्च को जब आंकड़े निकाले गए तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का मेडिसिन अंडरस्पेंडिंग वाज 63%, यानी कि यदि उनको 100 रुपए खर्च करते थे दवाइयों के ऊपर तो उसमें से 63 रुपए खर्च ही नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि सारे PHCs में बढ़िया तरह से दवाई मिल रही है? नहीं। देयर इज ऑब्वियसली अ सीरियस issue of both the way in which medicines are being procured and distributed, and also about the way in which the budgets are actually being released. Is this an unstated second kind of budget cut? This we need to think about. कि आपने allocate तो कर दिया, लेकिन अगर समय पे रिलीज नहीं किया, जैसा बोलते हैं कि justice delayed is justice denied, funds delayed are funds denied. अगर आप 30 मार्च को फंड रिलीज करेंगे तो खर्च ही नहीं होगा, और फिर आप कागज से बोलेंगे हमने तो allocate किया था, वो खर्च ही नहीं होगा, इसलिए अगले साल और बजट कम कर दो। This is a vicious cycle, a peculiar type of logic that is being put in place, जिस पर हम सबको चर्चा करनी चाहिए। महाराष्ट्र के केस में कितना बड़ा है ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे लगता है रवि आप इसके बारे में थोड़े आगे बात रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दैट इज द फ्रेमवर्क कि भाई अभी तो राज्यों को ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो अभी स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, इसके ऊपर अभी राज्य सरकारों को ही ज्यादा खर्च भी करना चाहिए। लेकिन और उससे तहत क्या हुआ है कि जो जैसे नेशनल हेल्थ मिशन या ICDS जैसे जो महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, इसमें 75% 25% शेयरिंग था, उसको चेंज करके अभी 60% 40% कर दिया गया, यानी कि 40% जिम्मेदारी वो राज्यों पे, राज्य सरकारों पे डाली गई। और ये एक बड़ा इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि राज्य सरकार जो है वो इस गैप को भरने में या तो उनकी इच्छा नहीं है या उनकी क्षमता नहीं है, या दोनों चीज़ों का कुछ कॉम्बिनेशन है, लेकिन कुल मिला करके वो नहीं हो रहा है। और ये देखा जा रहा है, ये कई राज्यों के बारे में, जन स्वास्थ्य अभियान के तौर पे हम अन्य राज्यों से भी संपर्क में रहते हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, जो NHM का स्टाफ है, इनके सैलरीज डिले हो रहे हैं। ICDS आंगनबाड़ी वर्कर्स के सैलरीज 6-6 महीने तक डिले हो रहे हैं, फिर बाद में मिलता है, कुछ मिलता है फिर नहीं मिलता है। और ये सारी चीज़ों की वजह से मतलब जो कंस्ट्रक्शन है बजट का, इसका सीधे स्टाफ के काम के ऊपर और उनके मोरल के ऊपर सीधा परिणाम हमें दिखाई पड़ रहा है। अब ऑब्वियस है कि बजट बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं हेल्थ सेक्टर के बारे में ये भी एक बात रखना चाहूँगा कि बजट में
बहुत छोटे बढ़ोतरी करके भी बहुत सारे सुधार लाए जा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ऑब्वियसली बजट बढ़ना चाहिए इन सारी समस्याओं को हल करने के लिए, लेकिन उसके साथ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जिनको तुरंत इन पॉलिसीज़ को लागू किया जाए तो महाराष्ट्र के हेल्थ सर्विसेज का सिनेरियो बहुत बड़े स्तर पे बदल सकता है। ये क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज। आज महाराष्ट्र में 2000 डॉक्टर हर साल सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं। महाराष्ट्र में 1800 पीएचसी है। आंकड़ा बिल्कुल सीधा है। एक साल के अंदर सारे महाराष्ट्र के हर पीएचसी में एक एडिशनल एमबीबीएस डॉक्टर हो सकता है। अगर ये जो पूरा पॉलिसी है जो ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं उनको प्लेस करने का, इसको अगर सही ढंग से लागू किया जाए, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वो अलग तरीके से देख रहा है, पब्लिक डिपार्टमेंट उसको अलग तरह से डील कर रहे हैं। तो ये बड़ा रिसोर्स हम खो रहे हैं हर साल। अगर ये आज से लागू कर दिया जाए तो विदिन अ मंथ ऑल PHCs इन महाराष्ट्र विल हैव MBBS डॉक्टर्स एडिक्वेट। और इसके बाद दूसरा, पोस्टिंग, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, ये जो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं स्टाफ के लिए। अगर आपको स्टाफ सब जगह उपलब्ध करना है तो इसके लिए आपको इसका अच्छा ट्रांसपेरेंट और नॉन करप्ट सिस्टम चाहिए। और अगर ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, अगर ये सिस्टम करप्शन का एक बेसिस बन जाता है, तो फिर स्टाफ का एलोकेशन बिल्कुल इरेशनल तरीके से होने लगता है। उसका कोई नॉर्मल लॉजिक से कोरिलेशन ही नहीं होता है। आपको एक ही बड़े शहर के हॉस्पिटल RH में 3 गायनेकोलॉजिस्ट मिल जाएंगे और जो रिमोट एरिया वहाँ एक भी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो इसके लिए कर्नाटक ने एक पूरा सिस्टम डिजाइन किया है कि ये कैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सकता है, जो कि स्टाफ की भी परिस्थितियों को ध्यान में रखे और सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखे, विच इज वेरी सक्सेसफुल। यू डोंट हैव, मे बी नॉट एवरीबडी फील्स इट्स अ गुड थिंग। चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल्स, महाराष्ट्र में ऐसे अस्पताल जिन्होंने अपने को धर्मादाय या चैरिटेबल हॉस्पिटल के रूप में दर्ज किया है, इनकी बहुत बड़ी संख्या है। मुंबई में, पुणे में जितने बड़े अस्पताल आपको पता है वो सारे के सारे ट्रस्ट हॉस्पिटल के रूप में लगभग दर्ज है। एक दो जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उनको छोड़ करके आप नाम लीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि वो ट्रस्ट हॉस्पिटल्स है। इन सब ने कानूनी तौर पे ये कमिटमेंट किया है लिखित रूप से कि हम 20% अपने जो बेड्स हैं ये गरीबों को या तो फ्री में या बहुत ही कम दाम में उपलब्ध करेंगे, लेकिन ये नहीं हो रहा है। 10,000 hospital beds in prime hospitals across Maharashtra are available today. The government does not have to spend a single paisa to make those beds available. It just has to harness them. It just has to effectively utilize those beds. This is a big resource which we are not being able to do. इसके लिए अगर एक वेबसाइट बनाया जाए, हेल्पलाइन तैयार की जाए और एक ऑटोनॉमस पब्लिक मैकेनिज्म से इन बेड्स को अगर एलोकेट किया जाए तो विदिन अ फ्यू मंथ्स अ ह्यूज रिसोर्स कैन बिकम अवेलेबल। जेनेरिक मेडिसिन, आपको पता है कि आज बाजार में जब आप जाते हैं दवाई की दुकान में, आप जिस दर पे दवाई खरीदते हैं इससे आधे, 1/3, 1/5 और कहीं कहीं 1/10 दाम में वही दवाई उसी क्वालिटी की मिल सकती है यदि वो जेनेरिक नाम से ली जाए। मतलब 1/3 to 1/4 तो आराम से आप उसको पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए कि आज आप आउट पेशेंट का 80% खर्चा दवाई पे होता है जब आप एक कोई आउट पेशेंट के रूप में, और इन पेशेंट का लगभग 45%। सो द ह्यूज बिगेस्ट चंक ऑन हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज ऑन मेडिसिन। इसके लिए क्या किया जा सकता है? जेनेरिक मेडिसिन की चेन, और जेनेरिक मेडिसिन की चेन, और आज मेडिकल काउंसिल के एक्ट में ये लिखा हुआ है कि ऑल डॉक्टर्स शुड प्रिस्क्राइब एज पर जेनेरिक मेडिसिन, बट इट्स नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। सो 2 things are required to ensure that doctors start writing by generic name, which is legally required, and to open a chain of generic medicines. Within 1 year, the out of pocket in expenditure in Maharashtra can be brought down to half. आधा हो सकता है। आज हम सब जितना खर्चा कर रहे हैं वो आधा हो जाएगा। इसके बाद सरकारी अस्पतालों को देखें तो जो बात मैंने पहले रखी कि एक तरफ तो मेडिसिन के ऊपर अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है सरकार का, दूसरी तरफ दवाइयाँ क्यों नहीं पहुँच रही? ये भी एक इंटरेस्टिंग सवाल। दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। जो देश पूरे दुनिया भर को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है वो क्या अपने देश के अंदर दवाइयाँ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन एंड द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर। So why are we not being able to get the act together in our own country, in our own state, to make medicines available in every PHC? We can send a rocket to Mars, but we cannot send paracetamol to our PHCs. Why is this happening? इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेडिसिन प्रोक्योरमेंट और सप्लाई सिस्टम है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। And it has been well proven. Tamil Nadu has shown the way. Kerala and Rajasthan have followed that model. An autonomous procurement system which is free of corruption, completely transparent, and demand-driven supply
हर पीएचसी मेडिकल अफसर के हाथ में पासबुक दीजिए, उसको एनवलप बताइए तुमको जो दवा चाहिए वही दवाई लो और जो दवा नहीं चाहिए वो मत लो। तो अभी जो अनावश्यक बिल्कुल जो एक ब्लैंकेट तरीके से अनावश्यक दवाइयाँ भेजी जा रही, जो नहीं चाहिए वो भेजी जा रही, जो चाहिए वो नहीं भेजी जा रही, ये सब बंद हो जाएगा। Tamil Nadu has shown that actually it can be done. The Tamil Nadu per capita public expenditure on medicines is similar to Maharashtra. It's not a big difference. It's around 30 rupees per capita. But the medicine availability in Tamil Nadu is far better than in Maharashtra. तो ये करने के लिए क्या चाहिए? कोई बहुत बड़े फंड चाहिए? नहीं, एक कॉर्पोरेशन बनाना है और उसको ट्रांसपेरेंट करना है, करप्शन को एलिमिनेट करना है और इस प्रकार की एक डिमांड ड्रिवन सप्लाई यदि व्यवस्था आती है तो आज विद इन 6 months in Maharashtra every PHC, every rural hospital as is the case in Tamil Nadu will have adequate medicines. प्राइवेट मेडिकल सेक्टर ह्यूज इशू, अभी मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो पूरा एक अलग मुद्दा है। और आज प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में क्या हो रहा है, प्राइवेट अस्पतालों में क्या हो रहा है, इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारी एक किताब है डिसेंटिंग डायग्नोसिस, मेरे कोलीग डॉक्टर अरुण गदवे और मैंने हमने मिलकर लिखी है। डॉक्टरों के मुंह से हमने ये पूछा है कि क्या चल रहा है इस समय प्राइवेट अस्पतालों के अंदर, सच्चाई क्या है, और ऐसे सच बोलने वाले हमें 78 डॉक्टर मिले पूरे देश भर में। उन्होंने उसके ऊपर सीटी बजा दी, विसल ब्लो कर दिया। They have blown the lid on what is actually happening in private hospitals today. I don't want to go into that. You can imagine, आप सबके अनुभव भी होंगे, लेकिन आज डॉक्टर्स का भी एक हिस्सा इसके बारे में खुल करके बोल रहा है कि ये बंद होना चाहिए। बड़े स्तर पे irrational care, unnecessary operations, unnecessary investigations, overcharging, gross irrationalities ये चल रहे हैं आज प्राइवेट अस्पतालों में। इसको कोई रोकेगा या नहीं? ये किसका काम है? ये कोई आदमी ऑर्डिनरी पेशेंट तो नहीं कर सकता है, ये तो सरकार को ही करना पड़ेगा और उसके लिए रेगुलेशन ऑफ द प्राइवेट हेल्थ सेक्टर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। अगेन इट्स नॉट गोइंग टू कॉस्ट एनी मनी बट इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल, it requires the government to put down the doctors lobby and say or at least deal with them and say कि देखिए बहुत हो गया, आपने बहुत 40-50 साल जो खाना पीना था कर लिया, अब अभी थोड़ा सा समाज की भी जरूरत को ध्यान में रखिए और इसके ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए, रेट्स का रेगुलेशन होना चाहिए, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, ग्रीवेंस रिड्यूसल होना चाहिए पेशेंट्स के लिए भी और जरूरी हो तो डॉक्टर्स के लिए भी। ये सारी चीज़ें संभव, इसका ड्राफ्ट तैयार है, इसका ड्राफ्ट तैयार है पिछले 3 साल से, लेकिन वो किस कंप्यूटर में या किस कबर्ड में है वो अगर आपको पता हो तो बताइए, हम तो नहीं मिल पा रहे हैं उसको। सरकार से तो लगभग हर 2-3 महीने में हम इसके बारे में पूछते हैं कि इसका क्या हो रहा है, तो हमें बताया जाता है कि नहीं वो होने वाला है, कुछ समय के बाद होने वाला है, और वो कब होगा सोच लीजिए। और आखिरी मुद्दा जो डॉक्टर कर्णिक ने भी बोला था कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है भी, वो एसआईएस का जो उन्होंने उदाहरण दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, स्टाफ भी है, दवाइयाँ भी हैं, लेकिन इसके बाद भी सर्विसेज नहीं मिल रही, इसका क्या कारण है? और ये भी एक सच्चाई। तो इसका मतलब ये है कि सारे इनपुट्स होने के बाद भी लोगों तक वो सर्विसेज पहुंचाने की एक प्रक्रिया नहीं हो पा रही और लोगों को भी वो सर्विसेज मांगने की जो अकाउंटेबिलिटी चाहिए वो अगर नहीं है तो वो स्टाफ काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दवाइयाँ मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। इस परिस्थिति को डील करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के हिस्से के रूप में कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग, लोकाधारित देखरेख आणि नियोजन, ये प्रक्रिया महाराष्ट्र में पिछले लगभग 9 साल से चल रही है और आज 14 जिलों के लगभग 1000 गाँव में ये प्रक्रिया जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट की गई है वहाँ बड़े बदलाव दिखाई पड़े हैं इसी परिस्थिति में। और हमने कंपैरिजन किया 40 पीएचसी जहाँ सीबीएम चल रहा है और 40 पीएचसी जहाँ नहीं चल रहा है, एंड द सर्विस डिलीवरी वाज 5 to 10 times बेटर इन सीबीएम एरिया विद द सेम रिसोर्सेज, क्योंकि वहाँ पे बाहर से दवाइयाँ लिखना बंद हो गया है, इलीगल चार्जिंग बंद हो गया है, पेशेंट के साथ बुरा व्यवहार बंद हो गया है, वहाँ पे एम्बुलेंस सर्विसेज, बेसिक डिलीवरी सर्विसेज कहीं बेहतर तरीके से मिलने लगे। तो ये एक ऑप्शन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, इसको एक्चुअली इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में इसको लागू करना चाहिए। तो जो हम रिसोर्सेज डाल रहे हैं वो लोगों तक पहुँचेंगे और लोग बताएंगे कि हमको सेवा मिल रही है नहीं मिल रही है, और लोगों ने कहा कि नहीं मिल रही है तो फिर उसको सुनिश्चित करने का की प्रक्रिया हो सकती है। ये 6 छोटे छोटे कदम हैं, वैसे इतने छोटे भी नहीं हैं, अगर इनको किया जाए तो 1 साल के अंदर महाराष्ट्र के पूरे हेल्थ सर्विसेज का नक्शा बदल सकता है। और इन 6 चीज़ों को करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत बड़े रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं। अंत में मैं आता हूँ कि हमें किस तरह का बजट चाहिए अगले साल। ये प्री बजट कंसल्टेशन है और ये हमारे पूरे चर्चा का शायद एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। तो पहली बात तो है कि हम राजस्थान की तरफ देखें। राजस्थान की कुछ और चीज़ें हमें पसंद है। राजस्थान के बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में काम भी करते हैं अलग अलग तरीके से। तो क्यों ना हम राजस्थान से एक और चीज़ सीख लें कि भैया आपका जितना पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर है ना उतना हम भी कर लेंगे।
हाँ, अभी राजस्थान लीडर है, हम उनके फॉलोअर हैं, हाँ, ये परिस्थिति है। तो राजस्थान का जो पर कैपिटा हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है वो भी अगर महाराष्ट्र अगले 2 साल में प्राप्त कर ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और इसके लिए हमको लगभग दुगना करना पड़ेगा अपना हेल्थ बजट। लेकिन ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। और अगर हम थोड़ा और आगे की सोचें तो एक और राज्य हिमाचल प्रदेश, वो भी कोई बहुत विकसित राज्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश का पर कैपिटा पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारे मुकाबले 3 गुना है, 3 गुना से भी थोड़ा ज़्यादा है। हमारा 830 रुपये है, राजस्थान का ऑलमोस्ट 1600 है, और हिमाचल का 2400 है। तो अगर इन टारगेट्स की तरफ हमको पहुंचना है तो अगले साल हमको कम से कम 40% बढ़ोतरी करनी होगी हेल्थ बजट में, यानी कि लगभग 14,600 करोड़ का बजट अगर हम करेंगे तो महाराष्ट्र के हर नागरिक के ऊपर सरकार 1,200 रुपये खर्च करेगी, जो नेशनल एवरेज के आसपास होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि हम नेशनल एवरेज के ऊपर जाएंगे, वी विल कैच अप। जो बैकलॉग की बात हो रही थी, वी विल कैच अप द बैकलॉग एंड जस्ट रीच अराउंड द नेशनल एवरेज। कम से कम इतना तो हम करें। और इसीलिए 7, ये आखिरी स्लाइड है, 7 जो हमारी टॉप प्रायोरिटीज हैं, पूरे महाराष्ट्र में सबको फ्री एडिक्वेट मेडिसिन की व्यवस्था की जाए। All vacant positions should be filled up and use the compulsory per service. Use 2,000 doctors coming out of government medical colleges everywhere across the state. Convert contractual staff to permanent staff in a phased manner. Achieve IPHS standards for health infrastructure. Expand in health infrastructure. अभी आज जैसा डॉक्टर कर्मी ने भी बताया, कई जगह ऐसी हैं जहाँ एक PSC के तहत 40,000, 45,000 पॉपुलेशन, ये पुराने नॉर्म्स चल रहे हैं। 2011 के कम से कम नॉर्म्स अगर लाएंगे तो मेजर एक्सपेंशन की जरूरत है। एक्चुअली मेजर एक्सपेंशन की जरूरत है, खासतौर से आदिवासी एरिया में भी, नॉन आदिवासी, तो वो एक्सपेंशन की शुरुआत तो की जाए। और पूरे राज्य भर में कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग, लोकाधारित देखरेख, लोगों के द्वारा निगरानी, जन निगरानी की प्रक्रिया, इसको जनरलाइज किया जाए, जिसके लिए कोई बड़े खर्चे की जरूरत नहीं। हाँ, पॉलिटिकल विल की जरूरत जरूर है, और उसके साथ में रोगी कल्याण समितियों के बारे में भी, और VCDCs और चाइल्ड ट्रीटमेंट सेंटर जो बंद कर दिए गए हैं, इनको तुरंत चालू किया जाए। ये हमारे शायद कुछ प्रायोरिटी हो सकते हैं। धन्यवाद। Thank you. Conclusion, I think the 7 points he stated, I think those are the key priorities that we need to work on. But just a few things to tie it up. We have various norms for so many years that even though they may not be optimal norms, but even those norms we have not been able to achieve. So whether they were IPHS standards for health or the RTE standards for education, why do we discriminate between government schools? I mean, you have Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya. Why can all schools be of the same standard and quality? Because there's a huge difference. In normal Sarkari school, the ZP school, you're spending about 10,000 per child per year, whereas in the Navodaya and Kendriya Vidyalaya, you're spending 40,000 to 50,000 per child per year. So that's the kind of difference that you see. Obviously, the results then show you the kind of change. So I think following benchmarks is very important, because the first parameter of quality healthcare or education is cost. So you have to achieve a certain level of resource mobilization before you can. And various studies have shown that in a country like India, at least 2.5% of GDP should be spent on health and 5% on education, if you want to reach a certain minimal kind of level of quality. So benchmarks, I think, very important. And as somebody said, that what is a benchmark of development? The benchmark of development is when the top decile of the population uses public transport, when they use public health facilities, and when they send their children to public schools. So I think that is the standard that we need to move towards. And health and education must remain in public domain. They should be treated as public goods. Today we see increasing commodification happening in both sectors. Education being privatized grossly, health services, public sector is disinvesting and private sector is taking over. So I think we need to change that, and that requires a political will. Without that, it's not going to happen. And our allocations are very low for health, education, and other social sectors. So we definitely need to make that transition. It's not that we don't have the resources. The amount of taxes that we collect is grossly inadequate. The tax GDP ratio in this country, both of center and states taken together, is around 17%. I mean, if you look at any country, even an underdeveloped country which is providing good social services to its population, health, education, etc., they have a tax GDP ratio of more than 25%.
Now, even if we actually reduce revenues foregone, okay, we don't only have the central government, state governments, we don't know revenues foregone, but the central government level, that itself, it's about 5 or 6% of GDP. So even if you can rein that in, I mean, health and education and welfare sectors can definitely benefit. Then the whole issue of the huge diversions which take place in the TSP and STP, the tribal subplan and the, I mean, they are all kind of notional allocations which are happening, but at the ground level, when you say that you have a norm of 1 PHC per 30,000 population, it should be applicable across the states for all population. What should then go for tribal and SC area is an additionality. So when you're talking about a 9% for tribals or 16% for SCs, additional to the development expenditure, you're actually talking about additionality to get rid of the discrimination that has happened over the years. So I think, but it is kind of seen in a very different way, and so those kind of changes are needed. The 14th Finance Commission has made direct allocations for local self-government, for panchayats and municipalities. And many state governments, I don't know what's the situation in Maharashtra, but many state governments are just appropriating that money and joining it with scheme. In Madhya Pradesh, they have joined it with some chief minister benefit scheme or something, and they're distributing it through that. That can't be done. I think it's unconstitutional to do that, because what the FC allocates is it's a constitutional body. So various things. Same thing is happening with PESA also in many states. And though I believe Maharashtra does quite well with PESA allocations, but I'm not seeing the data. So I think these are some broad issues that we need to, benchmarking is very important. We need to definitely raise the amount of the social sector budgets in the state. So we have to put that kind of pressure on that. It's not that we don't have the resources, we just need the political will to do that. Because when the FC increased the resources, untied resources to the states, you know what did Fadnavis say on the floor of the House? He said that now we can build more metros and urban smart cities, etc. He never talked about health or education or tribals or the Dalits. So I think we need to change that thinking also. Thank you. Thank you very much, Dr. I'll now invite the team from Booking Institute, Dr. Anjali Radkar and my friend Prashant Banswade to make their presentation. Before that, I would basically, as I understood that I will be talking on the tribal health, so I worked a little bit on the tribal health, and then it might take us to, how the allocation for the tribals, if you can. As the earlier speakers like Dr. Manisha and Dr. Shikla talked about the diversity, the Maharashtra is totally different. We are highly urbanized, 45% urban, and we have 10% tribal population. So we are actually balancing in these two ends basically. And when we are talking about the health, also the issues are totally different in the tribal areas, and the issues of the urban health they are totally different. So we are fighting with the communicable diseases at one end and the non-communicable diseases at the other end, and that is where the whole health issues really revolve around. But when we are talking about the budget and when we are talking about the public health, it is more about the communicable diseases, maternal and child health, and things like that. So basically, as we all know, that is the tribal population is 10.5 million now in Maharashtra, and it comes to 9.35% of the total population, and it is nationally, if you look at it, it is the second highest tribal population after Madhya Pradesh. So, and the growth rate of the tribal population is also quite high compared to the state growth. The state growth is 16%, vis-a-vis tribal growth is 22.5%, sorry for the
I hope. Then it is 22.5%. And there are states, there are districts like we all know, that is Dhule, Jalgaon, Pune, Nandurbar, Nashik. They have the dedicated growth is much faster. Nandurbar is about 69-70% population is the tribal population, and Gadchiroli is 37%. And so I mean huge populations. There are the districts. We have say 9 districts, I think, with the tribal population, the high concentration of tribal population. So I mean for that government is doing something. I mean I won't go into all that, and I'll directly go to how the tribal figures differ. I have used one source, National Family Health Survey, so that there will be the uniformity. I mean if I use the different sources, the figures really won't be comparable. So in that sense, actually, the fertility, basically it all revolves around the fertility. When the fertility has gone down, I mean over the period, NFHS has been conducted in 1992-93, NFHS 2 in 98-99, and NFHS 3 in 2005-2006. Actually, NFHS 4 also has done, and there are some results of NFHS 4 also have come, but there is no tribal comparison available as yet, so I haven't included it in this presentation. So the fertility definitely has gone down from NFHS 1 for the state as a whole, obviously for and also for the tribal population, that is it from 3.2 to 2.4. I mean for you who don't know about the total fertility, it is average number of children every woman bears when we in the reproductive ages. So this is from 3.2 to 2.4, it has come down, and the mean number of children ever born to women in the 40 to 49 years, that is the oldest, I mean after that they won't bear any children, has come down to 4.8 to 4, it is almost one child. So basically the fertility has come down everywhere, I mean state as a whole, obviously for the tribal population. Now, I mean there are a lot of efforts. I mean the fertility hasn't come down just like that. There are there is the contraceptive use has increased, and plus there are other development indicators also like that. And with the development also the fertility goes down. With the infant mortality going down, the fertility goes down, because they don't have to have the security of having more children, so that whatever number that is the desired family size they will have after certain time. So the infant mortality also has come. So there are various reasons why the fertility has really declined. So I mean directly coming here to the mortality, is the neonatal mortality is in the first month, mortality in the first month when the child is born. Post neonatal is between 1 month and 1 year. Then infant mortality is within 1 year. Child mortality is 1 to 4 years, and under 5 is 0 to 5 years. So these are the definitions that we have. And you see that is the neonatal mortality everywhere. I mean the mortality has come down. We all know that the infant mortality has declined. Lot of efforts the government is doing irrespective. I mean there are very serious outcome indicators. Like whatever the health, I mean whatever is the public expenditure that we have, or maybe whatever we are spending. So what is, I mean it has to be reflected somewhere. I mean how to quantify. That is whatever we are doing is doing well or not. Once again. I mean there are many there are data issues basically. The data on health is not available. I mean I would say that. I mean it is not available, and whatever the data that the government gives, we really don't believe in that data. I mean it is very sad to say all this. They have a huge machinery. They have the systems like HMIS, and the Maharashtra have already had the system. But still the data that they give us is not authentic, and we really can't use that data. So basically if we want to say something like this, we have to depend on the surveys, we have to depend on the sample. All the rates that the mortality, fertility rates that we get are from the SRS, that is the sample registration system. And suppose if we want to go, I mean if we want to break down like this, maybe the state wise and the social group wise and education and age and this, that, then we depend on the surveys like this, like NFHS, DLHS, whatever. So basically whatever the data is, it is from the sample, and it is not, though HMIS data etc. is available, it is not, we don't use this. I mean the ICDS data, Dr. Karnesh, I mean we never use that ICDS data, because the data on the adult nutrition that ICDS produces
the quality of the data is always questionable. So basically there is a huge problem in getting the health data. Getting the mortality data itself is very difficult because the deaths are not reported. If they are reported, the causes are not properly reported, the ages are not reported. There are so many issues about it. But still, the planning, whatever you do, it has to be based on the evidence. And so that data is missing, and whatever the planning for health is done is, I shouldn't say this, but kind of haphazard. On the basis of whatever the earlier trends are, on the basis of the general understanding of the planners, it is basically done on that, and we don't have the hard data. And when we don't have the hard data, whatever pre-plan, whether it has 100% meaning. So we need to have, I mean, whenever we are talking about the budget allocations, we really need to do something very seriously about the data. Then it will maybe, not this year, but maybe the years that are coming later, we can make use of this. So data is NFHS 3 data for Maharashtra for vaccination is, there is a big question mark. I mean, there are a lot of debates we've seen, you must have heard and read in the newspaper about that. But about the immunization, there are once again the issues are there. Actually, in fact, in the rural areas, we have a very well structured health infrastructure, and we don't have anything of that sort in urban areas. So that is one thing. So in rural areas also, but there are a lot of problems about the service delivery. As Dr. Shukla also mentioned, there are a lot of vacancies, and the vaccination program, though it is very well accepted, I mean in the community, it is not, and nobody says that I won't give the immunization to the child, okay. Maybe if you go and start talking about the contraceptives, people won't listen to you. But if you go there and start talking to them about the immunization, about the vaccination, definitely the mothers will listen, because they know that the child should be safe. Nothing should happen to him or her. So basically, there is an acceptance, but if you don't reach them, if you can't reach them, then there is a big problem. And that is, it has to be something like this. And there are the growth charts prepared by WHO, and then there we plot the weights there, and we see that whether the child is in the right band, and it says, okay, whether the child is, there is undernutrition or no. So basically, what we treat is the acute malnutrition. I mean, what the VCDCs, etc. Wherever, when the child goes beyond certain things, then there are schemes. I mean. So what we treat is acute malnutrition. Chronic malnutrition is very difficult to tackle, but fortunately, it is coming down. So the anemia is one of the major things that Indian women are fighting with. And more than 50% Indian women in the reproductive ages are anemic, so it is very bad, and now 3% are severely anemic, that is they have the hemoglobin level below 7, and mild and moderate is also very high. So the anemia, that we really need to do something about it, and for that not much really has been done so far. Then apart from anemia, there is one more indicator called body mass index, which tells you that is how your weight is really showing. So maybe if your BMI is calculated in certain way, and if it is below 18.5, then you are totally thin, and you are moderately or severely thin if the BMI is below 70, and you are overweight if it is 25, more than 25, and obese more than 30. So we are actually more worried about the first two lines. That is, if you see, that is for the state as a whole, there are 36% women who are totally thin, and if you look at the tribes, it is 52%, which is very, very difficult to get the data on health. But the ICMR has conducted several studies, and these findings are we have compiled from the various ICMR studies. They are not for the state as a whole, but they are micro studies, and conducted in the different states. It's not exactly for Maharashtra, but they are for the tribal. So actually, whatever it says, it is representative for Maharashtra. So basically, malnutrition is a major problem. So low birth weight babies, undernutrition of children, then the lower body size of the adults, as I discussed, then anemia, iron and vitamin A and B deficiency,
are major problems. Then maternal and child health problems like high infant mortality rate, under 5 mortality rate because of the unhygienic conditions, etc. We haven't gone into all that. Then communicable diseases like malaria, malaria, TB, leprosy, skin diseases. They also have the sexually transmitted diseases, HIV infections, typhoid, cholera, diarrheal diseases, hepatitis, and the viral fevers. These are all reported in the various ICM. And then there are a lot of conflicts among the tribes, and that is why there is a violence. There are burns, and there are of course motorcycle accidents, which are very recent things. Then their lifestyle is such that there is a high consumption of alcohol and tobacco among both males and females. They take alcohol and tobacco. Then the genetic disorders like sickle cell anemia, that is one of the major problems of the tribal and G6PD deficiency. So they face the genetic problem, genetic disorders because they marry among themselves and things like that. And those were separate, and like for any of us, we have the problems like they have the mental health problems, they have the specialty problems like orthopedic, surgical, etc. And they have the non-communicable diseases like hypertension, stroke, diabetes, and cancer. Then there is NNMB, that is the National Nutrition Monitoring Bureau, is there,